Welcome students to the last topic of the first chapter, economics development. Today we are going to discuss about the public facilities which you need to lead a better life, including public distribution system, HDR, Human Development Report, and we'll conclude with sustainable development. Monetary development or more average income may not procure a better life for you, which means money in your pocket cannot purchase all the goods and services which you need to lead a better life. Money cannot purchase a better environment, pollution free environment. Money cannot purchase an unadulterated medicine. Money cannot protect a person from infectious disease unless the entire community should take the step to prevent all these things. Current scenario, we can say that a good example for this, COVID-19. If we need protection from that virus, the entire community should act together. That is why we are all seated at our home and taking these virtual classes. Right? And money cannot purchase the compassion and love also. That is not in a book, but I am just adding that. And you have seen that in America is the richest country than us. Not only America, many European countries like Italy, Spain, Brazil, even Britain, you have seen that number of deaths. They can't purchase all the things. Even I have read an article that when the younger people they enter in the hospital for treatment, they remove the equipments of the older people and given to the younger people because they thought that let them die, the elder people let them die. This compassion and love also cannot purchase, my dear. And I'm very happy also in our country we are giving much care for the elderly people, old people. Anyway, that is another thing. We are discussing about the public facilities like schooling, health care, and we can say that cleanliness, etc. These are the public facilities we need to lead a better life. Right? In India, many people, especially many children, especially girls, from many pockets, they are unable to go to school. They are not getting the primary education as secondary education. Why? Because they are not getting the inadequate facilities. You are very lucky because your parents are very great and you have to thankful to those people because they are sending you to school, attain education and all the things, giving all the things to you. Number of kids in our country, in many places, they are not getting a chance to go to school, and you are getting everything I can say, but you are not utilizing those things. See, I am not giving any moral class, but बीच में आगे तो बोलना पड़ता है, isn't it? My dear students, utilize those facilities. Think about those people, those who are not getting the facilities. Thanks to your parents, you are very lucky because you are born and brought up by those parents. They are always behind you, giving all the things to you. Understood? Anyway, so all these primary, secondary education, that means literacy, as well as health care, that was the public facilities. You know well that Kerala is less IMR. Why? Because of health facilities as well as education, awareness. एक छोटा बच्चा, हमें पता है कि जो आपका IMR क्या है, 1 साल का अंदर जो डेथ होने वाला बात है. एक बच्चे अगर पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर उसको बीमारी आ जाए तो बच्चे तो नहीं बोले कि मुझे तो पेट दर्द है, मुझे वो प्रॉब्लम है, नहीं बोल सकते. लेकिन माँ और फादर, जो भी पेरेंट्स, जो भी रिलेटिव्स है, जो भी हो, उनको अवेयरनेस हो जाता है, सिम्टम्स से उस पता चलता है.
That is the, I think that is the importance of education. Education से उसने पढ़ चुका है सब कुछ, तो they will take to the hospital. नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, नहीं तो हम किसी और को बुला करके पूजा वूजा करके हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे. Now you are educated, directly you will go to this hospital and take the right treatment and right time, so बच्चे बच जाएंगे. So IMR less हो जाता है. So Kerala is having less IMR because of the health facilities and awareness, education. Understood? Right? And next PDS के बारे में अगर बात करेगा तो ये भी एक है, nutrition and health. Nutritional status, health and nutritional status of people depends on availability of cheap and quality grains. Understood? We are considering two states like Tamil Nadu and Jharkhand. You know, the rural people of Tamil Nadu are well off than the Jharkhand people, Jharkhand rural people. Better off. Why? Because the Tamil Nadu people, they are using facilities, as you have learned in 9th class, I think food security in India. Teachers taught, but I don't know you learned or not. या जो पहले बोला था वैसे सर हम छोड़ के आया 9th क्लास में, अभी हमारे कुछ याद नहीं है. चलो मैं रिकॉल कर देता हूँ. PDS means public distribution system. Through the ration shops, Government of India is giving grains, sugar, etc. to the poor people. Right? So 75-80% Tamil rural people, Tamilians, they are utilizing the PDS. So they are in better condition. In place, the people of Jharkhand, only 8% are utilizing this. Why? Think about this. Isn't it? Government of India is not giving special status to Tamil Nadu. Yeah, not giving to Jharkhand. That is not a matter. And also one more thing I wanted to say to you people. My mother is 84 years old. You know, this pandemic time or disease time, I heard that she received 10,500 rupees as pension. 10,500 rupees, 7-month pension, I think 7-month pension. Pension, वो pension हमने कुछ दिलाया नहीं, government से मिला है. Because we were the agriculture family, means farming करने वाले family से हैं. तो जो जब इसका जो Government of India is giving some contribution as a pension to the farmers, old farmers, my mother used to read that newspaper and all. Herself she called a ward member. जो हमने पढ़ा था civics में ward member को. And she only arranged herself. She called a person, and after 1 week he himself brought that application form also she filled, and I myself that time only filled also. And now she is getting. Why? This is known as awareness. This facility is available for all the Indians. But Kerala people now, they are ready to grab the things because of the knowledge. Narega, I have seen that Narega 2005. आप पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा, I don't know. नहीं है तो भी आप पढ़ेंगे कि Narega 2005. That was the facility for the people. Kerala people are totally used. Many things are like that. Isn't it? Widow pension also available. 1,300 rupees per month, I think. That also available. And sometimes I surprise also many people are standing in this labor chowk and all. Narega se labor chowk ka zaroorati nahi hai. We can utilize, but I don't know the people ko awareness kyun nahi hai, because of lacking of education. So my dear students, you want to stand in the labor chowk or you want to collect the things? Isn't it? So please, मेरा कहने का मतलब ये कि अवेयरनेस, नॉलेज रखो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो. एनीवे थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने सिलेबस से हट के, कोई बात नहीं, ठीक है. सो नेक्स्ट हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बताएंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय UNDP. UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम.
and they are also compare. They are also every year they are publishing, and they are publishing they are comparing the countries based on the three criterias. One is that living standard, that is living standard means per capita income, and second is health status, that is life expectancy, health status, life expectancy. What is life expectancy? In your book there is a table also given, देखिए उसमें नीचे आपको notes में life expectancy के बारे में दे रखा है, isn't it? It's an average life of a person, average life of a person since his birth time. जन्म लेने के टाइम, हम सब जन्म लेने के टाइम हम कौन सी एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा एक एज बना के रखा है. मेरे पास पुराना बुक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स. दैट मीन्स हम लोग 68 ईयर्स तक मतलब वेरी हेल्थी तंदुरुस्त से हम रह सकते हैं. उसके बाद हमारा डिटीरियरेट हो जाएंगे, हम डेथ के लिए जाएंगे. इसका मतलब नहीं कि 68 के बाद हम मर जाएंगे, ऐसे नहीं है, बट हम हेल्थी 68 ईयर्स तक है लाइफ. वेरा श्रीलंका साउथ एशिया में हमसे आगे है, 74.9 है, 80 ईयर्स तक वो हेल्थी होंगे हमसे भी. अच्छा, एचडी इस आपका जो क्या बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मीन्स यूएनडीपी जो पब्लिश करते हैं ना, वो रिपोर्ट 3 कैटेगरी है, 3 क्राइटेरिया है. वन इज दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड इज आपका पर कैपिटा इनकम, थर्ड आपका एजुकेशनल लेवल्स. एजुकेशनल लेवल मीन्स जो आपका लिटरेसी रेट हो गया, एंड नेट क्या बोलेंगे एनरोलमेंट रेशियो जब हमने पढ़ा था ना, वो भी है. स्कूल में कितने लोग जाते हैं, ये सब देखे, ये तीनों को देख करके, वर्ल्ड बैंक की तरह नहीं है. वर्ल्ड बैंक क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम का है, लेकिन ये तीनों देखेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ केयर, एज वेल एज आपका एजुकेशन स्टेटस, राइट, तीनों देखेंगे. उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट सेपरेटली पब्लिश करेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सब पब्लिश करेंगे, राइट. वो क्राइटेरिया के बारे में आपको याद रखना है. और उनके अकॉर्डिंग जो आपका क्या बोलेंगे 2014 आपका बुक देख लेना, नया डाटा आया होगा, मेरा बुक में पुराना है. 2014 का एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक के अकॉर्डिंग हमारा 177 कंट्री को उसने कंसिडर कर दिया, उसमें हमारा रैंक 135 है. पूरे वर्ल्ड 177 कंट्री को लिया गया है, 135 में हम लोग हैं. वेरास साउथ एशियन कंट्रीज में श्रीलंका इज द हेड, श्रीलंका हमसे भी आगे है, हेड ऑफ इंडिया इन रैंकिंग, 73rd, बिकॉज देयर पर कैपिटा इनकम, देयर लिटरेसी रेट, देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरीथिंग इज हायर देन अस. Higher than us, so 100% they will go into the high rank way, right? So think about this. Sri Lanka, we learned the first chapter, they face a civil war and all the things. Then also they got the ranking 73rd. Think about this, my dear, right? And Human Development Index, that means HDI, that considers public health. मैंने बोल दिया already. एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सबको कंसिडर करेंगे. इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सब देखता है इसका. जस्ट रीड द टेक्स्ट बुक एंड नोट डाउन द क्राइटेरिया व्हिच दे यूज फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज, राइट. एंड द लास्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट यू ऑल नो वेल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, isn't it? What is sustainable development? Sustainable development, we learned from 8th or 6th class. Sustainable development, we need the prosperity, but we should not harm the environment and think about the future generation के बारे में देखना, उनका पूरा resources we should not take. We should think about the future generation, and we should not harm the environment, but we need a development in the present. That is known as sustainable development. Simple way में बता दिया. तीन चीज याद रखना. क्या है? Need the development in the present, not harm the environment, think about the future. In such a way development को रखेगा तो हम उसको बोलेंगे sustainable development. As you all know that developed countries economy develop हो गया because of the environmental destruction and all the things. Example, we can say that economic development in the developed countries and developing countries has been attained at the cost of natural resources and environment. Development takes place through exploitation of क्या बोलेंगे renewable and non renewable resources. Economic development एक country का ऐसा होता है, natural means renewable and non renewable resources से होते हैं. Example, mining, isn't it? We are mine for
क्या बोलेंगे इसको, आयरन, गोल्ड, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा, बट वी आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट ऑल्सो. Environment become polluted, and the factories also expelling the smoke as well as poisonous gases in the environment in such a way that also, and also you know that the ozone layer is also damaged because of this environmental pollution, right? CFC gas and all the things you must have learned in science class. Apart that, now a lot of air pollution, water pollution, lot things are there, right? So problems of water pollution, air pollution also affected the lives of the people and will affect the life of the future generation also. So think about all the things. So we have to maintain the things. मैंने बोला कि you should not harm the, आप पढ़ेंगे हायर क्लास में क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में. क्योटो प्रोटोकॉल के में different countries also signed. We have to restrict, means limit the production of the harmful things, means the production of this AC and etc. Because AC and jet planes etc. they are emitting CFC gas and all. उसका जो प्रोडक्शन वगैरह लिमिट करने के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज UN का अंडर में उन्हें साइन वगैरह किया है, वो हमारा बुक में नहीं पढ़ने के लिए नहीं, जिसमें आपको जस्ट आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन टू यू, राइट? एनीवे, हमें डेवलपमेंट चाहिए प्रेजेंट में, बट वी थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट. वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट. आपको बुक में एक पॉकेट में दे रखा है कि जो ग्राउंड वाटर के बारे में दे रखा है, एग्जाम्पल ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर क्या होगा करके. आपको पता है कि जो आपका पेप्सी हो गया, कोका कोला एंड ऑल द थिंग्स, दे आर यूटिलाइजिंग द ग्राउंड वाटर एक्सेसिवली, एंड व्हाट विल हैपन, the level of groundwater is diminishing, and कल हमारा जो पानी डायरेक्ट जो शुद्ध पानी पीने का जो चांस खत्म ही हो जाएंगे, राइट? सेम एज इट इज बहुत अच्छा एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्सेज का है ग्राउंड वाटर, एंड दिस रिसोर्स आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स. बट हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे को रेन चाहिए, सो दैट उसके लिए हमें प्लांट्स को रिप्लांट करना पड़ेगा, बहुत कुछ है ना, अफॉरेस्टेशन करना है, ये सब कुछ सबको सोचना है. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्रूड ऑयल वगैरह, उसके बारे में हमने पढ़ चुका था. मिलियंस ऑफ ईयर्स विल टेक टू क्या बोलेंगे उसको दोबारा रिफॉर्म होने के लिए. एक्सोस्ट नेचुरल रिसोर्स को पूरा एक्सोस्ट कर रहे हैं हम लोग. अमेरिका जैसे कंट्री और सारे कंट्री, नॉट अमेरिका, आई एम नॉट ब्लेमिंग अमेरिकन, ऑल कंट्रीज दे आर यूटिलाइजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज. अब एक महीने से थोड़ा सा बच गया है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है. सो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, वो आपका 2 केस स्टडी या टेबल दे रखे, वो भी आपको रीड करना है. ओके, विद दिस वी आर कंक्लूडिंग द चैप्टर, एंड बोर्ड इंस्पिरेशन का जरूरत इसमें शायद नहीं है आपको. जो मैंने बोला है वो सब कुछ याद रखना, चैप्टर रीड करना. थैंक यू.